learners? Am I audible to all of you? Yes, sir. Audible. Okay. So everybody should Thank you, put in sir. the mute mode. So kindly write your name and enroll number in the chat box. So, my dear learners, I welcome today's session. Today is the last session, Professor Mohanty's session. So today is going to our research methodology. So I do feel you must enjoy this paper. So today's session is more interactive session rather than lecture methods, because distance education believes is a two-way communication. But you are hardly getting any kind of question from your side. But this is not a good sign. So suppose you have not received your study material, so no issues. Now slowly lockdown is going to over. So you will receive your study material by post in your home. So don't worry for that. So I mean our university will send the material to all of you through by post. So have a patience. You will receive your material. And another thing, what I am telling you, I had already circulated soft copy to you. I have already given mail. Also, I had put in the WhatsApp group. So, dear learners, please kindly go through with the study material. If you will not go through with the study material, simply will come to class and join, being a silent spectator. It's not at all fulfill our meaning which way we want to conduct a e-counseling session. Fine, because it's giving a this technology. It's giving immense opportunity to interact with teacher. It's not like that just only you are a silent spectator. You will keep on listening and sir will deliver the lecture. I don't think it's really any benefit to all of you. So my dear learners, before coming to the class, please go through with the study material, because I'm not telling that you will entire books you have to study, but but what I'm telling you, at least you should see the material, have a glance on the materials. So then you have an idea what is going to sir will teach you. Then you can put some question to teacher. So teacher also will generate that kind of interest to read. Because if the student will not ask anything to teacher, how teacher will assess him or herself, and what wants to improve, and what he has to look, and what he has to develop, and which portion he have to see. So that all kind of things depend upon the our learners, because our learners is not a spoon feeding learners, because you are all are matured learners. Okay, so what I feel and what I thought, so you have understood what I mean to say. In that only, in true sense, the distance education concept will be fulfilled. Otherwise, distance education system will defeat it, because if you only one way method or one way it will goes on, I don't think it will fulfillment of anything. So in true sense, and repeatedly I'm telling you, the IGNOU objectives, okay, reaching to unreach, using multimedia approach, technology, cost effective, openness, flexible, all these are objectives of the IGNOU. So these objectives, because our peer group is not, same kind of things. It's starting from 18 and 20 years, it goes up to 80 years, 90 years. You can't believe it. 80-year students are also, they are also joined in MA programs, because in the age of 70, 80, they are not going to do job with some passion, with some interest. Okay, so they are doing all. Taken admission in this course, and what are the material you are giving? It's a world class materials. There is no doubt about that. Okay, and you are telling is a Indira Gandhi National Open University, but it's not confined to our in India only. It's crossed the boundary of India also. In the near about 37 countries, IGNOU presence is there. So do you feel you are very fortunate? Don't feel that distance education students, you are lesser than conventional system. Not like that. Conventional system and distance education, now it's a vice versa, because now the conventional system students also using technology, okay, tutorial, assignment, all the things is coming. So with these words, I am not taking much time. So I am just handed over the session to Professor Mohanty, and what I am telling you, after finish the presentation of Professor Mohanty,
today's session will much more interaction. So learners, feel free with open mind. You ask the question, query what you had understood in this paper, what doubt is there, and what about IGNOU, whatever things you want to ask about assignment, examination, student support service, whatever things you want to know, please kindly ask the question. So today, rather more lecture, we feel that interaction is much more there. I mean, end of the session. So with these words, I request to Professor Mohanty, he will start his presentation. Professor Mohanty, I am Oh, handing thank you, over the sir. session. Welcome to the student session. Thank you, sir. Welcome, friends. As sir has rightly pointed out that we have already reached to the last class of research methodology today, and we'll try after some of my slides presentation, we'll try to have a discussion along with Dr. Panigrahi on various aspects of IGNOU, as well as I will also put forth a few questions, past year's questions, previous year's questions, so that we'll have a discussion on the kind of questions that is coming and the way you will write your answer scripts. So today we'll have a thorough interaction on problems, issues, previous year's questions, how you are going to answer the questions, what way your writing or your answers will fetch good marks. So all these things will be discussed, and Dr. Mohanty will also supplement things to you to enrich your examination and answer scripts. Thank you. Let us start. Friends, actually, for when I was trying to consolidate things yesterday evening as to from where shall I start today, I thought that it would be good before me to focus upon some of the aspects, some of the concepts, some of the issues and concerns related to qualitative research, which I have not been able to provide you a clear-cut understanding in my previous classes. It was what I thought that I would have, it would have been better had I been able to give you few more examples, few more clarifications and conceptual clarifications on some of the issues. So it is a retrospective thought from my side to see that if I have gone a little bit heuristically in my approach in approaching the class, or if I have not been able to clarify some of the issues before you, I have tried to take up some of the issues and concerns, concepts, and some of the jargon, some of the conceptual issues for your better understanding. So during my entire discussion, I have always tried to swing in between dependent and independent variables during research, but I have not been able to give you a proper understanding of dependent and independent variables during my lecture. So I thought it is good to have a discussion on the dependent and independent variables, which will guide you in your research. So when we're having a any kind of research hypothesis, you'll find there is at least a relationship between minimum two phenomena. There must be two social phenomena, and many sociologists consider it and define it in a way of cause and effect, which is a more simplistic kind of analysis of variables, I would say. गोटे कॉज एंड इफेक्ट को नहीं करी किसी सोशियोलॉजिस्ट सब्सिक्वेंटली बुझाई थांती जे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को व्हिच एक्चुअली क्रिएट्स doubts in the mind of researcher. So let me give you an example whereby you can very well understand the dependent and independent variables.
In your book also you will find this example. Suppose there is a hypothesis mu field research design ଯେତେବେଳେ formulate କରୁଛି on a particular issue, one of my hypothesis is illiteracy of mothers leads to female infanticide. जे जदि माँ माने आमे कहूचे पाठ पढ़ी नाहंती किंबा illiterate ताहले that might lead to female infanticide. कन्या भ्रूण हत्या जो आमे कहूचे याकू लीड करिवो बोलकरी जदि मोर गोटे निर्दिष्ट स्टडी रो मु जेते गुडिए हाइपोथेसिस नैची से हाइपोथेसिस भितरु one amongst the other hypothesis is the illiteracy of mothers will lead to female infanticide. A example आपण बुझी परिवे जे who is a dependent variable and which is an independent variable. तेणुकरी आज might be seeing that in the slide that female infanticide ए जो घटनाटी ए जो इशूटी ए जो निर्दिष्ट विषय वस्तुटी होची डिपेंडेंट वेरिएबल मो पई एवं लिटरेसी लेवल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. That means the changes in the independent variable will lead to a particular conclusion or particular change or particular output. So in this example, it would be easy before you to understand any kind of issues that you are dealing, any kind of social problems you are going to approach or going to study in future. You need to differentiate between the independent and dependent variable based on your problem statement, based on your hypothesis. So it would be easy when you are hypothesizing something prior to your actual study in the research design, you would be able to differentiate between the two variables, keeping in mind the problem of your study. Second, even if we had discussed theoretical understanding, the role of theories, I think we have not been able to discuss what is a paradigm and what is a theory. And in social science and social science research and theoretical perspective on sociology, आपण माने सब बेले ए दीटा jargon संगरे you will come across the jargon of paradigm and theory in subsequent papers. सब बेले आपण गोटे paradigm कोन एवं theory कोन ए दीटा भितरे बेले बेले पिलांकर confusion हुए, friends मानकर confusion हुए जे paradigm is nothing but another facet of theory. So what is a paradigm and what is a theory in sociological understanding? So आपण देखंतु a paradigm is your fundamental view of what. गोटे paradigm होची मोर गोटे larger world view होची paradigm. यार exactly मु ओडिया कहि परुनी. Later on when we will discuss with Dr. Anindrai, he might focus on Odia part paradigm Odia kon hai pare. And a theory is a set of statements that purport to say something about the way the social world works. आमे जो paradigm कथा कहूचे, larger world view कथा कहूचे, से larger world view को बुझिबा पई गोटे तारो लुक दबा पई the theory किबा आमे larger statements गुडा को कहूछु गोटे paradigm around there are theories which are interpreted through a paradigm. एवं paradigm को नहीं गिरी theory रो validity depend करे. एवं आमे एक कथा को आजे पर गोटे बड़ो theory तत्व पछरे गुडाय paradigm थांती गुडाय निर्दिष्ट प्रकार रो कोन को आजिवो छोटो छोटो अध्ययन करा जाई थिबा किबा इंप्रेशन माने ताकू देखि किरी छोटो छोटो इंप्रेशन एवं आइडिया को नहीं करी गोटे बड़ थियोरीज तैयारी हुए एवं
impression and ideas taken together is a paradigm which contributes towards theory building. Am I clear to you? So small paradigms and different paradigms taken together, they give a color to the theory. So theory building purvaru paradigms are there, or larger world views are there, impression and ideas are there, which creates a paradigm which in otherwise various paradigms helps in building a theory. आमे जेतबेले डाटा कलेक्शन कथा पढुतले गोटे जिनस मु छाड़ी जाइतली भले मते लागिला जे आमे जेतबेले गोटे स्टडी कंडक्ट करूचे आमे जो डाटा आणुचे किंबा सॉरी फ्रेंड्स आमे क्वेश्चन कौन करूचे किंबा आमर जो क्वेश्चन होउची क्वेश्चन रे परिवर्तन किछि कले आमे जो प्रकार रो फील्ड रो डाटा चाहूचे तथ्य चाहूचे से तथ्य सठिक भाव रे अना जाई परिबो की मने करंतु आमे कहूचे गोटे निर्दिष्ट गवेषणा भितरे आमे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उपरे आलोचना करछि किबा हमर विषय वस्तु मुख्य विषय वस्तु गवेषणा होउछि जे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आमे जे आलोचना करछि जेंडर कहले हम माने समस्त बुझिछि सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडियाज रिवॉल्व सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स जहाँ डिफाइन करछि सोसाइटी अराउंड सेक्स ताकू जेंडर आमे कहूचे सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उपरे आमे जदि किछि अध्ययन करिया को जाउचे आमे बेले बेले चिंता करू जे आमे जो प्रश्न गोटे निर्दिष्ट सब्जेक्ट उपरे करिचे ताकू नै करी लोक केमिति परसीव करंती सपोज आमे कहूचे रेस्पोंडेंट मानक पाकू हमरो जे सैंपल अछंती तांको पाकू आमे किछि प्रश्न धरि के जाउचे से विभिन्न मेथड हे पारे आमे क्वेश्चनर हो किंबा इंटरव्यू शेड्यूल माध्यम रे जाऊ स्ट्रक्चर्ड किंबा अनस्ट्रक्चर्ड वे रे जाऊ आमे किछि प्रश्न पचारुचे एवं इंटरेस्टिंगली बेले बेले कौन हुए सब्जेक्ट माने मध्य से माने बेले बेले वास्तव कथा जहा आपण माने बुझंतु आमे आइडियालिज्म कथा मध्ये पढुतले तो गोटे रियलिस्टिक माने डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ सोशल वर्ल्ड कथा जेतबे आमे कहू जे दीटा जिंस हम मुंडू को आसीबो जे वास्तव कौन एवं आदर्श कौन आपण माने बुझंतु एई दृष्टिरु जे सपोज मु जहा मो जीवन रे प्रोफेस करे नाही मो जीवन रे जहा प्रैक्टिस करे नाही व्हाट आई डू नॉट प्रैक्टिस इन माय पर्सनल लाइफ एट टाइम्स इन पब्लिक डिस्कोर्स I used to profess that one what I profess in public life I hardly practice that in my personal life that means there is a difference between my public life and my public discourse and my private life. So what I am talking to people in a large before a large gathering or what I am professing before a large audience is I am not practicing all those things. So why I am professing a particular thing that I am not practicing, the simple answer is that I want to show the outer world that I am an ideal person. एटा गोटे ही परे एवं the second thing is that अनेक समय आमे आदर्श कथा एति पई कहू जे जदि प्रचलित भावधारा जोटा कह जीवो दी जोटा वर्तमान गोटे सोशल रियलिटी किबा जोटा वर्तमान प्रचलित भावधारा रु बाहर को जाई कि जदि मु किछि कहूची मते people might think take me otherwise or by that I might offend someone मु गोटे सोशल सिस्टम रो गतानुगतिक चिंताधारा विरुद्ध रे जदि किछि कहूची किबा ताको छाडी कि अन्य किछि कथा कहूची ताहले I might offend the social
people around this social system को मोड offend करूची किंबा मु एथि पय कहूची जे people might take me otherwise तेणु करी when I am being interviewed or I am being questioned, I am being asked a particular question on a particular issue, I am not giving answer as per the reality or the true and correct answer. Rather, I am giving an answer which is not true, but otherwise I want to be in the group. माने गोटे बी लाइन ने रहिया पे जहा जुआडे गोटे पिंपुडीर धारा जाउची ताटू गोटे अलगा कथा गतानुगतिक चिंता धारा ठू मो गोटे अलगा कथा कहि कि निजको अफेंड करिवि नाही किंबा मु एमती किसी कथा कहबि नहीं जा द्वारा सोशली मते गोटे बॉयकटेड हला भलिया लागिवो किंबा मो कथा को गोटे माने ताकू नै करी गोटे विभिन्न प्रकार महल रे क्रिटिसिज्म हबो तो अनेक समय रे एई भलिया दृष्टिभंगी रु मु आदर्श बात को आदर्श को ग्रहण करके उत्तर दिए जोटा कि मु प्रैक्टिस करने तो सोशल साइंस रिसर्च रे एई भलिया किछि समय रे हुए जते बळे रेस्पोंडेंट को आमे गोटे वैल्यू लैडन क्वेश्चन पचारू गोटे वैल्यू लैडन क्वेश्चन जते बळे पचारू से आंसर देला बेल को मध्य इक्वली वैल्यू बेस्ड आंसर दबो कोई तो ता लाइफ रे ता पर्सनल लाइफ रे ता फैमिली लाइफ रे ता सोशल लाइफ रे ता विलेज लाइफ रे से ताको प्रैक्टिस करू नाही बट गोटे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जते बळे हम पचारुची सी गोटे आदर्शवाद सहित उत्तर दबो जहा से प्रैक्टिस करे नाही तार विभिन्न कारण हे पारे हम जहा आलोचना कले ता देरु गोटे कारण हे पारे जे सोशियोलॉजिस्ट माने कहंती बिकॉज़ he or she doesn't wish to offend anyone से ए प्रकार गोटे सेव आंसर दउची गोटे प्रचलित भावधारा को से क्वेश्चन करू नहीं ताको क्रिटिक हो नहीं किबा ऑफेंड करू नहीं जे पचारुची तार इमोशन काले ऑफेंड हो बोली कि सी कोन करची गोटे रेडीमेड भलो प्रोटेक्टिव सेव आंसर दउची बट see his or her answer from the perspective of the research, from the perspective of the person who is conducting research. He wants to have realistic data. He wants to retrieve true and realistic picture of the problem or picture of the society itself he or she is studying. So when the respondent is not able to give or not giving truthful answer to his questions, then the whole purpose of the research becomes at times goes in vain. तेणु कर एई प्रकार जिनस रे बेले बेले देखा जायछि जे क्वेश्चन हाउ टू पुट क्वेश्चंस हाउ टू फ्रेम और रिफ्रेम क्वेश्चन इज ए वेरी डेलिकेट इशू एंड वेरी इंपोर्टेंट इशू बिफोर द रिसर्चर जिते बड़े गोटे निर्दिष्ट प्रश्न उत्तर गोटे रेस्पोंडेंट आदर्शवाद हिसाब रे दउची तार कॉन्सिक्वेंस को चिंता करी दउची से काले आ काहा को ऑफेंड करी दउची बोल कि भाबी करी चिंता करची तार आंसर गुडी को गोटे फ्री अनबायस्ड बायसलेस आंसर हो नहीं सेते बेले द रिसर्चर कैन थिंक दैट कैन ही रिफ्रेम द क्वेश्चन सो एटा को क्विक्सोटिक रिलायबिलिटी बोली कहती तेणुकर जो क्वेश्चन मु पचारुची एवं सेतरे जो आंसर आसुची ताहा केते दूर मो पाई रिलायबल होउची एई बेसिस रे मु चिंता कला परे कैन आई विल थिंक दैट कैन आई रिफ्रेम दैट क्वेश्चन रिलायबिलिटी ऑफ डाटा एटा सेतरे आपण एग्जांपल देखंतु डू यू बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन जदी एई प्रकार रो गोटे ओपन एंडेड क्वेश्चन पचरा जाउची जे आपण पुरुष एवं महिला मानक भितरे इक्वालिटी किंबा तांको भितरे समानता को विश्वास कर समानता उपरे विश्वास करंती कि दे ऑर्डिनरीली एवरीबॉडी or most of the respondents will give the से गोटे आदर्शवाद उत्तर देवे जदि ना करिवे सेमानक भितर भाबिवे जे काले सी चिंता करिवे जे रिसर्चर विल टेक मी गोटे रिसर्चर मते खराब भाबिबो कि मु गोटे पुराना मांधात्या अमलर बोली मते भाबिबो कि से हुए तो घरे एटा मेन एंड वुमेन ता घर भितर प्रोफेस कर नथुबो प्रैक्टिस करू नथुबो पुरुष महिला भितर ता मनस्तात्विक स्तर
ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମାନତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଇ ପାରେ, ବଟ୍ ସେ ଆନ୍ସର ଦେଲା ବେଳକୁ ୟେସ୍ ହିଁ କହିବ, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ 20 ଜଣ ୟେସ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ नो ଯଦି କରୁଛି ତାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବି ଅନ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଭେନ୍ ଦି ରିସର୍ଚର ହିମସେଲ୍ଫ ମାଇଟ୍ ଟେକ୍ ହିମ୍ ଅଦରୱାଇଜ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଧାରା ପୋଷଣ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ୟେସ୍ କରିଛି ଆନ୍ସରରେ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉଠି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଲୋକର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋଜଲି ସେଇ ଫିଲ୍ଡ ବେସ୍ରେ ଆମେ କରୁଛେ, ତା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଟିଂରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ practicing what he is saying or what he is believing. He seems to believe that he is having same respect to men and women, but in his real practice he is not practicing the same. So ଯଦି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଆନ୍ସର ପରେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ଚାଲିଚଳନ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଏଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ତ ସେ ଜାଗାରେ I must see to it that I must ensure that I will be able to reframe the question. ମୁଁ ତାକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ରିଫ୍ରେମ୍ କରିପାରିବି କି, ଏବଂ ରିଫ୍ରେମ୍ କଲେ ମୋର ଆନ୍ସର ପସିବଲି ଆଉ ଟିକେ ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ସେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ଏବୁଲ ହବ, and I can get an unbiased answer from him. So probably it is a good idea to ask, କଣ do you think that women profess Hello, sir. Hello. Hello. Sir is not there. No, sir. Sir nahaନ୍ତି. Sir, left line ଯାଇଛନ୍ତି। Left ହେଇଗଲେ sir. Wait. ନା କଣ ଦେଇଛ? ବାବା ଦେଖିକି ଏଇ କୁହ। କାଇଁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ 1 ଉଠିଛ? ହଉ।
सर आपण लिव ହେଇଛନ୍ତି Am I audible, friends? बहुत थोड़ा कटुची Yes, sir. Yes, sir. सुबुची ना अच्छा मु कोठी हमें कटिथिला कोठी मु जानि एक्चुअली मते पाणिग्राही सर कहला पर मु जानली को स्लाइड रो कटिथिला हमें The testing reliability of Testing data. reliability. ओके 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 थैंक यू ए जो टेस्टिंग रिलायबिलिटी डाटा पूरा सरी जाइतला कि बुझिथिली सरी जाइतला एटा नहीं सर अधा पढ़ा है नहीं सर अधा पढ़ाई ओके ओके थैंक यू ताले हमें सब बेले गोटे कथा मन रखिया कथा जे हमें जे कोनोसी समय रे हमें फील्ड को गला पूर्व जो क्वेश्चनर किंबा हमें इंटरव्यू शेड्यूल तैयारी करूचे हैं प्लीज बियर इट इन माइंड दैट मियरली framing questions will not solve or not give proper response from bring proper response from the respondents हमें जो प्रॉब्लम को नहीं कर जाइए फील्ड को एट टाइम्स हमें इंटरव्यू शेड्यूल नहीं चे क्वेश्चनर तैयारी करिचे एंड वी आर हैप्पी दैट वी हैव actually posed many questions relevant questions to the problems I am addressing through my research but at times what happens without our knowledge and without unknowingly even my questions at time is unable to bring in the desired result that I am looking for तो अनेक समय देखा जाए जे because of various reasons the respondent is either clever enough to give answer or he thinks that his answer might offend the researcher or his answers might go against the existing norms and values of the society एगुड़ा को भाभी करी बेले बेले से आंसर देला बेले को से मापी चुपी करी उत्तर दबो मु सबले क्लेवर कोनी बट एट टाइम से भाबीबो जे ऑफेंड करछि काले केले बेले भाबीबो जे गतानुगतिक चिंताधारा गतानुगतिक सामाजिक भावधारा को नेकरी बिलीफ सिस्टम को जदी हैम्पर करूछि तार कोनसी आंसर से ही विल बी very much careful about giving the truthful answer to the question rather he or she will give you a very ideal kind of answer जहा हबा कथा जहा आदर्शगत भाव में हबा उचित से उत्तर देव जोटा से निजे मध्य प्रोफेस करे नहीं पर्सनल लाइफ तो दिस विल अगेन इम्पैक्ट द आउटकम ऑफ योर स्टडी सिंस वी आर अंडरटेकिंग ए स्टडी यूजिंग मच ऑफ आवर टाइम एंड मच ऑफ आवर रिसोर्सेस we need to be careful enough to frame and reframe questions time and again so that a proper answer will crop up and I will generate authentic and truthful data from the field ए दृष्टि रो हमें बेले बेले रिफ्रेम केमिति करबा हेलो सर गोटे होची जे डू यू बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन जदि आपन को मते नॉर्मली जदि किछि लोकन को फील्ड रे पचरा जाए बिलीव विश्वास करो कि नहीं पुरुष एवं महिला के भितरे तारतम्य को ताले बिलीव करिबारे समस्त हां कहबे कि मैक्सिमम लोक हां कहबे बहुत कम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट लोक बोध हुए मना करि पारंती बट दैट इज वेरी रेयर बट इन नॉर्मल एंड जनरल parlance रे हमें देखिबा इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मोस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट्स
giving much of your time in the field and you are very close to those individuals, you might have observed that in practice they are not actually believing in all these things. They are not practicing this kind of ideal that they have shared to you as answer to your questions. So there, in order to get more authentic and truthful answer to your question, you might think to pose that same question in other way around. ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ सोशल साइंस जेहेतु गोटे आब्स्ट्राक्ट नेचर जिनसको स्टडी करूचे आमी जेतोळे कहूचे एई प्रकारर वैल्यू लेडन क्वेश्चन जोटी गोटे सब बेले गोटे मूल्यबोध थिबा मूल्यबोध भित्तिक प्रश्न आम समाज रे पचरा जे सोशल साइंस रे तेणु कहि से मध्ये एथरे जो एग्जांपल दिया है से कहूचे इट इज प्रोबेबली अ गुड आइडिया टू आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन। इट इज नॉट नेसेसरीली दैट one can assure you that 100% that आउ गोटे प्रश्न पचारले जे आपण पूरा सटीक उत्तर पाइबे से कथा नो, but to some extent it has been seen in many cases that by framing and reframing question, reorganizing questions, reorienting your questions in a different manner, it is expected that you might come out with another set of answers or different kind of answers. So it is expected and nothing is sure about social realities. कारण सी जे आरो क्वेश्चन ने सटीक उत्तर दबा हम जानी ने, but it has been tested time and again जे देखा जाय छी जे how better you are framing your questions, how better you are reframing, reorienting your ideas and questions so that the other person is feeling free or is not feeling कौन कहा जो offending to anybody while giving his answer, और से ऑफेंड करूनी सोशल सिस्टम को नॉर्म को बोल कि तार गोटे निजस्व मतामत से दबा पे एबल होई पारे जदि सेम प्रश्न को से आ गोटे वे एठी एग्जांपल दैछि जे डू यू थिंक दैट वुमेन प्रोफेशनल्स आर एज कॉम्पिटेंट एज देयर मेल कलीग्स, सेतिरे यस नो अपेक्षा ही इज फ्री टू गिव हिज ओपिनियन, गोटे डिस्क्रिप्टिव वे हिज ओपिनियंस कैन कम एंड यू कैन गेट समथिंग बेटर देन द अर्लियर आंसर ऑफ यस। So got a subjective interpretation of things see doji, and from his subjective interpretation of things you can objectively choose to use some of his answers for your analysis. He will give a subjective interpretation of things. Here he is not his answer will not be restricted to yes or no. So his subjective interpretation of answers, interpretation of things will help you in coming forward in having a conclusion, in reaching out to a conclusion with a objective frame of mind. Hello sir. Yes. Hello sir. Hello. हाँ The slide is not visible sir. voice टा audible हो नहीं, Slide sir, slide is not visible. देखा जाओ नहीं सर। हाँ स्लाइड टा देखा जाए। ओके मोटा को रिफ्रेम करे चेष्टा करछि फ्रेंड्स। हां Yes sir. एबे देखिला सेटा दिसुछि कि Yes sir. दिसिला ना से स्लाइड टा देखा गला नहीं सर स्लाइड आसे नहीं जस्ट सर था ऊपर पे सर आसे सर मु जो स्लाइड टा कहउतली एबे नहीं सेटा सर शो करना सर। अच्छा ठीक है एबे फ्रेंड्स देखा वाला की यस सर। देखा ना यस ओके देखो एटा बुझी पाले तो जिंस जे फ्रेमिंग एंड रिफ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपोर्टेंट। कारण आमे माने जे तोळे मास्टर्स डिग्री करूतलु फ्रेंड्स 25-30 वर्ष पूर्वरु माने आमे निजे रिसर्च मेथोडोलॉजी को डरुतलु एवं एते डिटेल्स आमे
क्लास रे पढ़ी नथिलु एवं गोटे वैक्यूम माइंड को नेकरी आमे 2 वर्ष जाक मासे मासे फील्ड टूर करिछु थीसिस लिखिछु बट एबे रेट्रोस्पेक्टिवली जते बेले 20-25 वर्ष पर आमे चिंता करूछु जे आमे सेते बेले कोन मेथोडोलॉजी अप्लाई करथुलु केमिति डाटा रो रिलायबिलिटी देखिथिलु ताले लागुची जे एंटायर थीसिस वाज नथिंग बट ए रिपोर्टेस गोटे रिपोर्टिंग हेतिवो सेते रिसर्च रो आर अक्षर नथबो तो जिते बड़े रिसर्च मेथोडोलॉजी कथा आमे निजे मु एबे पढुची पढेइबा पई सेते बेले मु देखुची जे केते इंपोर्टेंट जे हाउ इंपोर्टेंट इट इज टू एक्चुअली prepare questionnaire prepare questions keeping in mind the problem we are going to solve or going to unravel or the area that we are going to study तो से दृष्टि रु मु भावुची reliability of data is important in that sense when you are putting questions in a very refined form and when you are preparing questions you must bear it in mind that you are asking the question on a social fact or social reality to a person who is living in the same society sharing the common belief and norm system बुझी पाले तो आमे सोसाइटी रे जते बेले रहूचे एवं जो लोक को से सामाजिक समस्या ऊपर किबा सामाजिक विषय वस्तु ऊपर तार मतामत संग्रह करूचे से तो गोटे जिंस मुंडे रखिबा कथा जे सी ताकू जहा पचारुचे सी ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कल्चर दैट कस्टम दैट ट्रेडिशन दैट रिलीजन दैट सोशल प्रैक्टिस दैट सोशल रिलेशनशिप सो we need not be very careless in asking questions in such a manner that he will not feel free to share the truth with you कारण तार से बंचुवा गोटे सोसाइटी रो सी क्लोजली एसोसिएटेड हेइथिबा गोटे सोशल सिस्टम रो स्ट्रक्चर रो सी गोटे पार्ट तेकरी एमिति वैल्यू लेडन क्वेश्चन को जते बेले आमे पचारुचे सी जेहेतु डरिकरी ऑफेंड करिवो नै बोली ता सोसाइटी रो नॉर्म रु बाहर को काले ता उत्तर जीवो से जहाँ भावुथबो ऑब्जेक्टिवली बेले बेले कहिबो नाही बिकॉज ता फ्रेंड्स की जदी सुनुचंदी से कहबारी ये एमती केमती उत्तर दोची आम समाज रे या प्रैक्टिस करा जाय नै किबा तार मतामत जदी आमे लडुचे ता मतामत ता जदियो इंडिपेंडेंट हेइथिबो से सेठी समस्त को सामने रे इंडिपेंडेंट मतामत दबा को हेतो सेति कि ही मे नॉट कम फॉरवर्ड टू गिव हिज ऑब्जेक्टिव आंसर और ट्रूथफुल आंसर नेक्स्ट कांसेप्ट होची ट्रायंगुलेशन ट्रायंगुलेशन रो ओडिया जदि आमे खोजिबा ताल देखिबा जे आमे गोटे इंग्रजी रे गोटे वर्ड अछि तार बेस्ट ओडिया हबो जे ट्रायल एंड एरर आमे जो कहूचे आमे बारंबार चेष्टा करिबा गोटे सत्यता को खोजिबा बेले विभिन्न प्रकार रो दिगरे उद्यम करिबा when you are when we are trying to unravel truth गोटे साइंस रे जदि आमे कहबा सेठी गोटे आपन को बही रे साइंस रे गोटे एग्जांपल मध्ये देइची जे से कहूची गोटे भेसल गोटे सी गोटे जते बेले नौका माने गोटे शिप जते बेले जाउची से देखुची नेविगेशन टर्म रे गोटे शिप रो पोजीशन पे मेजरिंग ए भेसल्स डिस्टेंस फ्रॉम मोर देन 1 पॉइंट ऑन द शोर गिव्स ए मोर accurate reading of its location गोटे माने समुद्र रे गोटे निर्दिष्ट प्रकार शिप रो लोकेशन टाको स्टडी करिया को विभिन्न स्थान रु ताको केमती ताको अध्ययन करा जाउची पर्यवेक्षण करा जाउची जे विभिन्न प्रकार मनकर दूरवीक्षण यंत्र रे ताको देखाउची विभिन्न गोटे जागार अवस्थिति को विभिन्न प्रकार रो डायमेंशन रु ऑब्जर्व करिवा मो कथा बुझले ना साइंटिफिक ये रो गोटे निर्दिष्ट जिनिसर अवस्थिति को विभिन्न डायमेंशन रु विभिन्न प्रकार स्थान रु निरीक्षण करिवा ऑब्जर्व करिवा जदि सेही जिंसटा को हम सोसाइटी भीतर जेमति ज्योमेट्री सर्वे एगुडा कथा से एग्जांपल दैछि जे ट्रायंगुलेशन मेथड हैज बीन एक्चुअली द ओरिजिन ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड इज ज्योमेट्री सर्वे एगुडा को कहवा होछि जदि ताको हम सोशल साइंस रे अप्लाई करिया को चेष्टा करिवा हमें कहबा जे गोटे सोशल प्रॉब्लम को गोटे सोसाइटी रो गोटे निर्दिष्ट समस्या को विभिन्न दृष्टिभंगी रु आलोचना करिवा
आमे आज बोधुए आलोचना भितर मु आउ गोटे पार्ट तळे पछपट स्लाइड रो अछि जे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव माने हम दृष्टिभंगी कथा कहू एक्जाक्टली सही भलिया गोटे गोटे लोकेशन को लोकेट करबा पे जेमति विभिन्न डायमेंशन रो जिंस को देखि कि तार अवस्थिति को बुझीबा पे चेष्टा करा जायता विज्ञान रे किंबा ज्योमेट्री रे किंबा सर्वे रे सही प्रकार रो आमे आपण माने रास्ता रे जाउथला बेला आज काली देखु छी एनएच रे रास्ता तयार होची दी मुंड रे दी जण सर्वेयर गोटे बाडी लगा हिची एवं सेथरे से अनौचंती ता माने रास्ता रो सीधा ताको कोठी से पूरा सठिकता निरूपण करबा पे एमाने गोटे निर्दिष्ट क्षेत्र रे सर्वे करूचंती एक्जाक्टली से जिंसटा गोटे सोशल रियलिटी को सोशल सिस्टम को किंबा सोसाइटी रो गोटे निर्दिष्ट दिग को अध्ययन कला बेले आमे ट्रायंगुलेशन मेथड टाको केते यूज करि परिबा सेही अप्रोच रे केते जाई परिबा सठिकता निरूपण करबा पई विभिन्न प्रकार रो रिसर्च मेथोडोलॉजी रो यूज किंबा अन्य प्रकार रो पर्सपेक्टिव दृष्टिभंगी रु जिनिस गुडी को अध्ययन करी आमे जदी गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत हवा हुए तो आमे गोटे सठिक सामाजिक समस्या किंबा सामाजिक विषय वस्तु उपरे सठिक भावरे आमे सिद्धांत रे पहुंची परिबा एटा होची ट्रायंगुलेशन ता माने बारंबार आमे विभिन्न दृष्टिभंगी विभिन्न थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव रु मध्य गोटे सामाजिक व्यवस्था को अध्ययन करिवार आवश्यकता रही थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कोन आमे वेरियस थियोरीज पढिचे फर्स्ट क्लास रे हैं फंक्शनलिस्ट थियोरी हैं एगुडा को सब पढिचे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म मु कहउतली बायोलॉजी संगे सोसाइटी को केमते हम तुलना करछि स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियोरी जे मनुष्य सोसाइटी रे मध्य एलिमेंट्स अछि लाइक आवर बायोलॉजिकल ये सेमानकर फंक्शन टेकन टुगेदर इज आवर बायोलॉजिकल सिस्टम एवं सोशल सिस्टम रे हमें कहू समाज रो निर्दिष्ट कोन एलिमेंट्स अछि स्ट्रक्चर गुडा को अछि जेमती रिलीजियन इकोनॉमी सोसाइटी तारो धर्म एगुडा को तार गोटे गोटे एलिमेंट्स से एलिमेंट्स टेकन टुगेदर constitute a social system तो सही प्रकार रो ट्रायंगुलेशन मेथड रे हम सब बेले कहू विभिन्न पर्सपेक्टिव रु समाज शास्त्रविद जते बेले गवेषणा करबा को जाय तते विभिन्न दृष्टिभंगी विभिन्न थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव रु अर्लियर बिल्ड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव जा अछि ताकू नेगरी से गोटे निर्दिष्ट सामाजिक समस्या को अध्ययन कले सठिक भावरे समाज रे से विषय उपरे तार गोटे निर्दिष्ट अवधारणा से सृष्टि करि परिबो किबा प्रेजेंट करि परिबो रिफ्लेक्ट करि आ गोटे जिनस मु डाटा एनालिसिस बेलू काली बहुत तरबर रे गला बेले गोटे जिनस छाड़ी की जाइतली जे क्वालिटेटिव डाटा रो प्रोसेसिंग आ एनालिसिस केमती हुए आपन को पाखरे संपूर्ण डाटा फील्ड लेवल सब आसी गला परे परर अवस्था ये जे क्वालिटेटिव डाटा रो प्रोसेसिंग आ एनालिसिस कला बेले कोन कोन हमें विल हैव इन आवर बैक ऑफ आवर माइंड तीनिटी जिनस आमे कथाबार्ता करूचे जे डेस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन और कनेक्शन आपण डेस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन दा बुझी पारुथबे समस्ते कारण आपण माने समस्ते सोसाइटी रो विभिन्न दिग को किबा सोशल साइंस रो विभिन्न जिनस पढिचंदी पॉलिटिकल साइंस हो सोशियोलॉजी हो एंथ्रोपोलॉजी हो बीए रे तेनु करी यू कैन वेरी वेल रिलेट योरसेल्फ विथ डेस्क्रिप्शन गोटे जिनस रो डिस्क्राइब करबा मु गिवन मो पाखरे जति डाटा तथ्य आसी गलानी मु ताकू बेस करिकरी मु डिस्क्राइब करबा पे चेष्टा करूची किछि जिंस एवं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन मो पाखरे जहा तथ्य अछि ताकू मु क्लासिफाई करूची किबा पर्यायभुक्त करूची जो प्रकार तथ्य मो पाखो आछि ताकू डिस्क्राइब कला परे सेही डिस्क्रिप्शन को नै करी मु तथ्य गुडी को क्लासिफाई करूची किबा पर्याय भाबरे रखुची किबा थाके गिर रखुची बोली हम कहबा एवं व्हाट इज कनेक्शन जे मु जते बेले डिस्क्राइब कली आ क्लासिफाई कली दी क्लास कनेक्शन पाई मो पाखरे किछि मटेरियल नाही डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन फील्ड मते किछि डाटा मिलिछि आ थरे कहि दे मु भूली जाउची जे डिस्क्रिप्शन जते बेले हमें करूचे ऑन द बेसिस कोन ना डिस्क्रिप्शन ना बेसिस होउची गोटे होउची कॉन्टेक्स्ट गोटे होउची इंटेंशन आ गोटे होची प्रोसेस मु जे कोनोसी डाटा रो जते बेले डिस्क्राइब करूची मु फील्ड को जाई जो तथ्य आनिछि ताको डिस्क्राइब कला बेलकू से डाटा गुडी को एनालाइज कला बेलकू मु देखिया पड़े ये को कॉन्टेक्स्ट रो डाटा को मु एनालिसिस करूची माने को पृष्ठभूमि
को नेकरी ए तथ्य गुड़िक फील्ड रु किंबा मु लोक आनी पृष्ठभूमि कौन आरटा हूँ इंटेंशन कौन को पृष्ठभूमि रू आनी कौन तार बेस आरटा हूँ इंटेंशन कौन मोर आनिबारे जेहेतु मो रिसर्च डिजाइन करूची मैं गुडा सब जानी किंतु डाटा जेतेबेले मु क्लासिफाई करूची डिस्क्राइब करूची मु निजे को पचारुची डाटा को देखिकरी एवं सेही बेसिस रे मु डाटा को डिस्क्राइब करूची एवं को प्रोसेस रे मु आनीची मु कोन टूल्स एंड टेक्निक यूज करूची एटा परे आपण डिस्क्रिप्शन आ क्लासिफिकेशन परे कनेक्शन द कनेक्शन पार्ट इज इंपोर्टेंट बिकॉज you all know what is description and what is classification आम अल्प बहुत आम जीवन में करुचे छोट मोट स्टडी रे मध्य आम जिनस जो आनुचे ताको थाकोचे केमती रखुचे एनालाइज करुचे एवं क्लासिफाई करुचे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ माय स्टडी आई एम क्लासिफाइंग माय डाटा अवेलेबल डाटा बट व्हाट इज कनेक्शन and I am not giving you the details of connection. We'll discuss what is connection during our discussion. So I'm not going to discuss what connection. Please think about it. What might be connection? You have got description of data, available data अपन मान को पाखरे अछि आपण describe करूचंदी तार context तार intention आ process को नेकि ताकू आपण describe कला परे आपण को description हिसाब रे आपण classify करूचंदी data को एवं ता परे there is a very important part is connection मु कहूची what is that very important part we will discuss in after the completion of the slides आपण माने मन रखितांतु कनेक्शन ऊपर हम आलोचना करिया तापरे आमे ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च किंबा हमर गवेषणा रे आमे अध्ययन कला बेले सामाजिक अवस्था को किंबा समाज रो विभिन्न विषय वस्तु को अध्ययन कला बेले आमे गोटे रिसर्चर ता बहुत ऑब्जेक्टिव होबो बोली कहिছে बहुत ऑब्जेक्टिव माने से इम्पार्शियल होबो बोली हम कहिছে बट एठी आ गोटे टर्म हम देखुचे जे एथिकल कंसर्न गोटे कोन होबो ऑब्जेक्टिव होबो ऑनेस्ट होबो पुडी एथिकल कोन होबो केमिति कोन करी कि जने ता रिसर्च रे मध्ये एथिकल होबो मु पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे सिना एथिकल हेबी टू बी एथिकल इन माय रिसर्च व्हाट इट कनोट्स यार अर्थ कोन मु एथिकल होबा माने कोन हेले मु एथिकल हेली बोली जणा पड़िबो एथरे गोटे जिंस देछि जे प्रोटेक्टिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म मोर सब्जेक्ट जे मु जा को इंटरव्यू करूची किबा मोर जो माने की इन्फॉर्मेंट्स से माने फिजिकल आउ इमोशनल किबा साइकोलॉजिकल हार्म रु बंचिबे तांको मु हार्म जेमति ड्यूरिंग माय स्टडीज दे विल नॉट बी फिजिकली और इमोशनली और साइकोलॉजिकली तांको ऊपर कोनसी बाधा न आसीबा दरकार एंड मोर इंपोर्टेंटली आपण फिजिकल बाधा न देई पारंची सो you need to be sure from your side that you are not psychologically affecting that person negative psychologically आपण ताको हार्म करू नाहंती बोली करी आपण एन्श्योर निजु को निजे करिवे को पड़िबो सेकंड जिंस होची protecting the subject's privacy and confidentiality सीए जहा उत्तर दउची मु आउ पांच जन को संगरे ता ना नै कि शेयर करिवार आवश्यकता नाही तेनु करी मु तारो कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी को केते रेस्पेक्ट करूची टू व्हाट एक्सटेंट आई एम रेस्पेक्टिंग द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डाटा एंड इंफॉर्मेशन माय रेस्पोंडेंट हैज प्रोवाइडेड टू मी इट इज the onus of researcher or me to see or ensure that I am protecting the privacy and confidentiality of my source or my respondent. Third is protecting the subject against unjustifiable deception. Decept kariba mane ठकिबा चातुरी करी गोटे जन को मिसलीड करिबा मोर किछि तथ्य दरकार somehow I want to retrieve that data from the field हम ताकू जेकोसी कारण ताकू ठकी करी ताडू से तथ्यटी आनिबा पे चेष्टा करूची डिसीव करूची माने डिसीव आरो जिंस कोन होची जे ताकू मु विश्वासघातकता कला बढिया जिंस सो मु विश्वासघातकता करी करी ताकू ठकी करी मु किछि तथ्य ताटू नउची व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर माय स्टडी एवं लास्ट जिंस एक्वायरिंग द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द सब्जेक्ट
मु बोधे थर्ड क्लास ना फोर्थ क्लास रे कहूतली जे आजिकली जोटा 30 वर्ष तले नथिला 40 वर्ष तले नथिला आजिकली गोटे नुआ जिनस हो गेलानी जे फील्ड रु आमे जाहाटू तथ्य आणुचे ताटू गोटे इन्फॉर्म्ड कंसेंट मध्ये अणा होची बेले बेले जेते बेले पीएचडी को डिफेंड करछन पिला माने जाय कि यूनिवर्सिटी रे सेठी से माने देखौछन लुक मु अनबायस्ड हिसाब रे मु जाय कि लोकन कोटू जेउ माने मोर सब्जेक्ट तांकोटू जा पचारिछि प्रायर टू दैट आई हैव sought their permission seeking permission of people I am interviewing prior hand before field को जीवा पूर्व मु तांकू पचारिछि जे आपण मु एई विषय रे गवेषणा करूछि कि अध्ययन करिवा पे जाउछि विषय वस्तु ऊपर मु सविशेष तांकू कहूछि एवं तापरे तांकू पचारिछि ए विषय वस्तु ऊपर I have framed a questionnaire मु आपण को किछि प्रश्न पचारिवा पे गोटे तयारी करिछि एवं ता ऊपर आपणकर इंडिपेंडेंट मतामत चाहूछि ए मतामत आपण मते दबा पई आपणकर अनुमति देबे कि प्रश्न पचारिनी मु ता संगे इंटरव्यू करिवा पे ताटू गोटे अनुमति मु आणुछि तापरे मु ताकू पचारुछि सी दिस इज व्हाट द एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्चर टुडे दिस काइंड ऑफ एथिकल कंसर्न्स has become more prominent more important हे गेलानी सोशल साइंस रिसर्च रे कारण अनेक जगह रे देखा जायछि जे लोक मानकर बिना नॉलेज रे गुडाई जिंस नै करी इवन आपण माने समस्त सुनछु इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर गोटे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट वर्तमान खाली इंडिया रे नुह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गोटे अंतर्देशीय त माने इंटरनेशनल माने कोर्ट रे मध्ये एटा ये हे परियो कोन जे व्हाई इट इज इंपोर्टेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आमे सेदिन कथावार्ता होले आदिवासी संप्रदाय गोटे बुढ़ा गोटे पुराना बुढ़ा लोकर मते बहुत ज्ञान अछि जे गोटे निर्दिष्ट प्लांट गोटे गछ गोटे गुळमरु को प्रकार रोगर निदान हे परियो सुन जानि छथि and it has already happened in many parts of the world that किछि लोकंकर सेही प्रकार ज्ञान जहार तांको ऊपर पैटर्न रहिबा दरकार तांकर एकचाटी अधिकार रहिबा दरकार ताकू नै करी किछि कंपनी किछि लोक किछि रिसर्चर ताकू निज अख्तियार को आनी आछन एटा देखा जायछि जो लोकर ओरिजिनल ज्ञान से लोक रिकॉग्निशन पाइनी ता पई कोनोसी प्रकार एप्रिसिएशन पाइनी बट पीपल हु आर कनिंग एनफ टू पेनेट्रेट इनटू देयर वर्ल्ड तांको वर्ल्ड को जाकी पहुंची चंती कनिंगली तांको टू डिसीव करी कि तांको विश्वासघातकता करी तांको तथ्य आनी चंती एवं निज नारे छापी चंती निजर ज्ञान बोली बाहर देखै चंती निजे तार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिसाब रे तार फाइनेंशियल एवं अदर सोशल गेन करिसेंती ए सब को दृष्टि रे रखी करी वर्तमान कहया होची सोशल साइंस ए प्रकार जिंस सेठी एथिकल स्टैंडर्ड एथिकल कंसर्न को मेंटेन करिया कथा एवं इट इज द ओनर्स ऑफ द रिसर्चर रो मुख्य दायित्व टू एन्श्योर दैट एगुडा को न होबा कथा आ गोटे हूँ आम मैंने डाटा डाटा बोल के समय कथा होचे सब बेले डाटा कथा कहूचे एवं आप बही को जो जीवे से गोटे देखिए डाटा एंड मेटा डाटा आप क्वेश्चन पाइबे जे व्हाट इज डाटा एंड व्हाट इज मेटा डाटा सो मेटा डाटा गोटे कॉन्सेप्ट अच्छी गोटे जार्गन अच्छी जहाँ कि आपण माने देखिए सो मुख्य तथ्य को अवदा माने to get or to receive or to retrieve the main data which has been which is there for the problem of the study more problem of the study pai jo prakar ro data mu aniya pai chesta karuchi se data ro jo guda ko kon कहजिवो से डाटा को आनिबा पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट अछि ताको मेटा डाटा को जाय माने करंतु गोटे डाटा हमें आणुचे से जगह गोटे लोक से लोकर गां तार सेक्स तार कास्ट तार फैमिली बैकग्राउंड सो से कहूची मेटा डाटा समराइजेस बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा व्हिच कैन मेक फाइंडिंग एंड वर्किंग विथ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ डाटा इजियर गोटे डाटा रो प्रिलिमिनरी जिंस होची मेटा डाटा तापर क्वालिटेटिव रिसर्च रा दीटा जिंस मु छाड़ी माने ताकू गुरुत्व दे नथली गतकाली गोटे होची ग्रास्पिंग आ गोटे होची रेंडरिंग गोटे होची ग्रास्पिंग
grasping and rendering. এটা जो grasp ଲେଖା ହେଇଛି kindly read it as grasping, ing grasping ଆଉ rendering. ଅର୍ଥରୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ render ମାନେ surrender କରିଦବା ଦେଇଦବା, grasp ମାନେ to comprehend କରିବା ବୁଝିବା. ତେଣୁ କରି क्वालिटेटिव रिसर्च रे दीटा बड़ जिनस हुए जे ए प्रोसेस रे मूल जिनस दीटा होची grasping the realities around me. This whole purpose of this study जे existing tool and technique को नहीं करी गोटे social reality किंबा गोटे social phenomena को grasp करिबा किंबा ताको मु comprehend करूची बुझुची unravel करूची explore करूची निजे अध्ययन करूची एवं ता द्वारा गोटे सिद्धांत रे उपनीत हो ता माने मु प्रथमे I am unraveling some truth, I am studying a particular phenomena through some tools and technique. मु grasp करूची ताको बुझुची निजे ग्रहण करूची एवं rendering होची मु जहा पाइली ताको मु केमिति रेंडर करूची किंबा सरेंडर करूची किंबा ताको मु इन टर्न मु सोसाइटी को केमिति ताको दउची मु थ्रो पेपर बही माध्यम रे आर्टिकल माध्यम रे लेखुची मोनोग्राफ माध्यम रे लेखुची रिपोर्ट रे लेखुची एकेडमिक आर्टिकल्स लेखुची लेक्चर डिलीवर दउची सो दिस इज a kind of process used in qualitative research. मु सोसाइटी रो किछि ग्रास्प करूची एवं मु किछि दउची एवं अनेक समय आमे लास्ट रे जतबेले सेतबेले पढुतले जे जो माने एक्शन रिसर्च करंती जे माने पॉलिसी रिसर्च करंती जो माने ग्रास्प जहा करंती से माने पॉलिसी रे डायरेक्टली फीड करंती ए सब जिंस न करी कि मध्य पॉलिसी लेवल रे किंबा विभिन्न गवर्नमेंट फोरम रे गवर्नमेंट एजेंसीज रे डिपार्टमेंट रे गवर्नमेंट एजेंसी संगे शेयर करंती सो वंस यू आर ग्रास्पिंग समथिंग you are rendering something and while you are rendering your understanding of society or understanding of social reality there are many mediums of rendering things आपण ताको शेयर करिवार मीडियम्स बहुत बढ़ी जाई छी तर आपण कोटी कोटी शेयर करूछन टू ब्रिंग इन सोशल चेंज आपण रिक्वायर्ड सोसाइटी परिवर्तन किबा सोशल ड्रीम रे जहां आपण चेंज देखेबा चाहउछन थ्रू रेंडरिंग हमें करू नाउ जेहेतु मुझे कहते जे थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव कौन ताको आउ टिके बुझापी मुझे तीन चारोटी बोधे स्लाइड करिछि सो पर्सपेक्टिव माने हम बुझीचे जे दृष्टिभंगी को हम पर्सपेक्टिव कहूचे तो व्हाट इज ए थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव आर द बेसिक assumptions about how society functions the role of sociology and the application of a specific set theories in studying social life theoretical perspective होची गोटे बेसिक assumption it's not a 100% reality गोटे assumption हमें लेइछु जे how society functions एवं गोटे एई प्रकार assumption गुडा को set of assumptions become some valid theories एवं आपण मान को मु प्रथम क्लास रे कहिछि जे सबु theories सबु time and age पई valid है नहीं that is the difference between natural science and social science नेचुरल साइंस रो गोटे लॉ को बहुत रेयरली आमे ताको चैलेंज करि पारु किबा चैलेंज करिवार किछि थाए बहुत रेयरली चैलेंज होय आमे जेमति H2O कथा को जे इट्स ए ऑल टाइम प्रोपाउंडेड थ्योरी जोटा को विशेष किछि चैलेंज करिवार बाटो नाही ताको एडिशन करा जाय पारे ता देर आ किछि जोड़ा जाय पारे बट H2O is H2O in a perfect laboratory condition two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen would bring in water आमे जानि छै एटा परमानेंटली रेस्ट थ्योरी बट सोशियोलॉजी रे हम जेतोले थ्योरी बिल्डिंग कथा कहूछु assumptions about how society functions गोटे पर्सपेक्टिव तो या जे assumptions about how society functions तो assumptions cannot always be static मो कथा बुझले ना हम जेतोले स्टैटिक और डायनामिक कथा कहउतले सोसाइटी सब जिंस डायनामिक चेंजेबल सब बोले सोसाइटी चेंज इज आल्सो ऑलवेज चेंजेबल सब प्रकार चेंज रो परिवर्तन अछि तो सोसाइटी इज नेवर a static one तेगुर से जगह रे assumptions about how society functions एवं से assumption to नहीं करी जो theories तैयार है छी से theories can always be challenged can always be reframed reoriented changed new theories can be proposed एगुडा को हे करियो एवं जेतबे बेसिक assumptions कथा कहूचे ए बेसिक assumption रो एग्जांपल्स कोन सब
आमे कहूँ सोसाइटी इज ए यूनिफाइड होल दैट सिक्स इक्विलिब्रियम सोसाइटी रो निजस्व गोटे माने आमे कहू बेले बेले ना सोसाइटी रो निजस्व गोटे बैलेंसिंग नेचर अछि गोटे बैलेंस सोसाइटी रो निजर बैलेंस अछि लॉ ऑफ नेचर अछि which gives a particular shape to a particular society. Society is composed of groups competing for scarce resources. एटा गोटे बेसिक एजम्पशन ए भले हजार एजम्पशन हम पाखे अछि एटा एग्जांपल दिया अछि जे कोन एजम्पशन एजम्पशन माने हमें धरि नै छु हमें मानि नै छु एवं एई मान्यता को नै करी थियोरीज तयारी हेछि तबे मान्यता रे जते परिवर्तन हो थियोरीज पर्सपेक्टिव रे मध्ये परिवर्तन हो कौन मान्यता कि सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स कंपीटिंग फॉर स्कैर्स रिसोर्सेस सोसाइटी रे सब बेले विभिन्न ग्रुप माने वर्ग दल हमें पाऊ जो माने स्कार्स रिसोर्सेस पाई कंपीट करंती बुझि परले तो एवं आमे जते बेले एई प्रकार गोटे एग्जांपल नौचे जे सोसाइटी रे जदी जते मूल्यवान द्रव्य अछि रिसोर्सेस अछि ताकू नै करी कंपटीशन सब एज रे हेछि ताले सेते बेले आमे आपण माने जदी पढिथि पॉलिटिकल साइंस रे कार्ल मार्क्स रो कथा कहूचे रिसोर्सेस लिमिटेड अछि सब बेले दीटा फोर्सेस आमे देखुछु सोसाइटी रे प्रोलेटारिएट एंड बुर्जुआ बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट भितरे फाइट होची सब जिंस रिसोर्सेस को नै करी कारण रिसोर्सेस रो कंट्रोल रे प्रोलेटारिएट अछि ठीक रे बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट भितरे फाइट होची आमे गोटे गोटे क्लासलेस सोसाइटी कम्युनिज्म सोशलिज्म रो सृष्टि बोली कहूछु ठीक रे जदी आमे धरि नउचे जे सोसाइटी इज कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स कंपीटिंग फॉर स्कार्स रिसोर्सेस ताहले ए प्रकार रो थ्योरी बिल्डिंग प्रोसेस आरंभ हो गेला मार्क्सिज्म एगुडा को ए थ्योरी या चारिपटे रिवॉल्व करके थ्योरी डेवलप करछि जे सोसाइटी रे रिसोर्सेस आर स्कार्स रिसोर्सेस आर ऑलवेज स्कार्स रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड फॉर दैट सबोले कंपीटिंग फोर्सेस आर देयर बट थिंग इज दैट मार्क्सिज्म पर मध्य नियो मार्क्सिज्म आछि जे कि ए प्रकार रो कम्युनिज्म चिंताधारा को नै करी से माने क्रिटिकल है चंदी सोशलिज्म whether it is a reality or not आकु अचीवेबल सोसाइटी रे करिवो कि नै ताकु से माने क्वेश्चन करचंदी कि सब बेले मोर कहबा कथा थ्योरी बिल्डिंग रे पर्सपेक्टिव रे आपण सब बेले परिवर्तन देखिबा को पाइबे जेहेतु इट डिपेंड्स ऑन द assumptions people have social life can be measured through observing daily interaction आमे धरि नै छु जे सोशल लाइफ को आमे ऑब्जर्वेशन माध्यम रे इंटरेक्शन माध्यम रे स्टडी करि परिबु बट इज इट ऑलवेज ट्रू आमे जहा ऑब्जर्व करिवु जहा ऑब्जर्वेबल अबाउट सोशल इंटरेक्शन रु आमे सोशल लाइफ को सब बेले ऑब्जर्व करि परिबु नाही दैट इज आल्सो इक्वली ट्रू सब बेले ऑब्जर्वेशन माध्यम रे आपण सोशल लाइफ को मेजर करि परिबे नाही देयर आर समथिंग वेरी हिडन elements beyond our imagination beyond the comprehension of human mind जोटा सोशल इंटरेक्शन बाहर होइतो सब जिंस सोशल इंटरेक्शन भितरे आमे सोशल लाइफ रे आमे डेली इंटरेक्शन माध्यम रे सोशल लाइफ को स्टडी करि परिबा नाही सोसाइटी और सोशल सिस्टम इज सो मच डायनामिक इन नेचर आ गोटे जिंस आमे गोटे assumption नहीं जाइछु जे थ्योरी सही प्रकार बिल्ड हेछि जे सोशियोलॉजी शुड बी यूज्ड टू एनैक्ट सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन को आमे केमती एनैक्ट करबा ताकू केमती स्टडी करि परिबा तेगरी सोशल चेंज को नै करी विभिन्न थ्योरी तयारी हेछि जे सोशियोलॉजी शुड स्टडी इट बट एट टाइम्स सोशियोलॉजी इज नॉट always capable of studying social change. There are host many of social sciences those who study social change as well. Sociology एकमात्र सामाजिक शास्त्र नुह जहाँ सोशल चेंज को गभीर भाव में अध्ययन करे ता बाहर मध्य अन्यान्य समाज शास्त्र गुड़ी को सामाजिक परिवर्तन को अध्ययन करती सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू फ्री एटा हम assumption जे सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट शुड बी वैल्यू फ्री माने मूल्यबोध रे ऊपर को उठी समाज को अध्ययन करिवार गोटे शास्त्र हवा कथा समाज शास्त्र किंतु कथा जेते बेले समाज मूल्यबोध को नै करी तयारी समाज भितरे नैतिक एवं सामाजिक मूल्यबोध अछि जणे व्यक्ति किंबा गोटे
ब्रांच ऑफ स्टडी जे सोशियोलॉजी ताकू अध्ययन गोटे वैक्यूम रे हो नहीं सोशियोलॉजी किंवा सोसाइटी रा स्टडी किसी इंडिविजुअल करूचंती एवं कहा जाए जे इंडिविजुअल आल्सो कम्स फ्रॉम द सेम सोसाइटी वेयर वैल्यूज आर एट इंटरप्ले समाज भितर जो समाज से व्यक्ति बाहर जे गवेषणा करुच्ची अध्ययन करुच्ची से समाज रे गोटे पार्ट एवं सी जेतेबेले सोशियोलॉजी आम एग्जाम्पशन गोटे नहीं जाऊँ सोशियोलॉजी शुड बी वैल्यू फ्री टू व्हाट एक्सटेंट वन कैन बी वैल्यू फ्री व्हेन स्टडीइंग द सेम सोसाइटी व्हेयर ही और सी इज कमिंग फ्रॉम बुझिपारे एवं आम थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ला बेलू बोधे से आम पढ़ी जे मेजर आम जदि थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव बेसी देखा जे सोशल साइंस रिभल्व करुच्ची बेसी तीन टारे गोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे गोटे कॉन्फ्लिक्ट रे आ गोटे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म आपन को मु थियोरी रे मु कहि नथिली सेते बेले तेकरी आम सोसाइटी को समाज रो विभिन्न दिग को जते बेले गवेषणा अध्ययन करा होची सेते बेले तीनोटी मुख्य दृष्टिभंगी रु देखा जाउची एवं सेही प्रकार थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव प्रथम होची स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जहाँ बारंबार आम कही जे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गोटे सामाजिक समाजशास्त्र को बुझापी जो प्रकार थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव तार माने आरंभ आम नेचुरल साइंस रे देखीचे लेकिन नेचुरल साइंस रु सोसाइटी को गोटे बायोलॉजिकल बीइंग सहित तुलना करा जायछि तार जेमती गोटे स्ट्रक्चरल एलिमेंट अछि स्ट्रक्चरल एलिमेंट टेकन टुगेदर से स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को नहीं तांकर सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम तैयारी सेमती मनुष्य समाज रे मध्ये सेमती अछि समाज गोटे सिस्टम सेते बेले होची तते बेले यार विभिन्न यूनिट्स विभिन्न एलिमेंट्स आर वर्किंग इन कोहेशन गोटे समाज सेति बेले सठिक भाव में गति करि पारछि तकरी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को प्राय सोशियोलॉजिस्ट एवं सोशल साइंटिस्ट माने गोटे मेजर थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव हिसाब रे ग्रहण करि आसीचंती एवं सेमानकर रिसर्च एवं थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी रे बहुत प्रमुख भूमिका रही एंड सेकंड इज कॉन्फ्लिक्ट गोटे थियोरी हिसाब रे निया जाए जे सोसाइटी रे सोशल चेंज को प्राय देखिबा पई सोसाइटी विभिन्न चेंज मॉडिफिकेशन एगुडा स्टडी कला बेल को देखा जाए जे कॉन्फ्लिक्ट थियोरी बहुत गोटे हेल्प करिछि सोसाइटी रे सोशल चेंज आनिबारे कॉन्फ्लिक्ट गोटे बहुत बड़ा भूमिका ग्रहण करिछि कॉन्फ्लिक्ट बहुत सोशियोलॉजिस्ट माने ए प्रकार मध्य मत दियंती कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ए नेगेटिव टर्म रादर कॉन्फ्लिक्ट रो निजर गोटे फंक्शनल नेसेसिटी रहिछि कॉन्फ्लिक्ट को आम सब गोटे नेगेटिव न्यस्तात्मक अवस्था हिसाब से बुझू नेगेटिव कॉन्सेप्ट हिसाब से बुझू बट कहा जाए जे थ्रू कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी रिन्यूज इटसेल्फ टू ए न्यू हाइट आ गोटे नुआ प्रकार सोशल चेंज आसे सो कॉन्फ्लिक्ट को आम जिते बुझा कॉन्फ्लिक्ट माने वायोलेंस नुह वायोलेंट आउटब्रेक को खाली आम कॉन्फ्लिक्ट बोली बुझा कथा नुह कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज जदि आम देखुचे से देखु गोटे आपण माने टिके भी सुनी थिबे जदि पॉलिटिकल साइंस रे कहा जाए जे देयर आर थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस तार एक्जाक्टली मु ओडिया कहि पनी आमे आलोचना जेते करिया पॉसिबली पाणिग्राही सर विल हेल्प अस जे थीसिस कोन एंटीथेसिस कोन सिंथेसिस कोन आपण बुझंतु समाज रो प्रचलित भावधारा भितरे गोटे निर्दिष्ट विश्वास किंबा निर्दिष्ट विषय वस्तु आम गोटे अवधारणा रही हठात गोटे समाज रे ता एंटीथेसिस गोटे आसिला ता को विरोध करुथुवा गोटे मतामत आसिला एवं ए दीटार चर्निंग रे ए दीटार कॉन्फ्लिक्ट ए जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भितरे किछि वर्ष परे आमे देखिले गोटे सिंथेसिस आसिला गोटे नुआ तत्व पुणी समाज रे विकास लाभ कला तो आमे सेही दृष्टि रो जते बेले देखु जे कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर कॉन्फ्लिक्ट आल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज न्यू जिनस जहाँ जो आसिकी गतानुगतिक चिंताधारा आमको बाधा दिए प्रथम प्रथम आम ग्रहण करूना वी रिजेंटमेंट आम भीतर देखा दिए तो कॉन्फ्लिक्ट आल्सो ब्रिंग्स सोशल चेंज तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव गोटे मेजर पर्सपेक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग सोशल चेंज एंड सोशल रियलिटीज अराउंड अस सेमती से बुझे जो स्कार्स रिसोर्सेस कथा आम से कहले जे सोसाइटी सब रिसोर्सेस आर स्कार्स एवं से सब देखा जाइए कंपटीशन होची सोसाइटी सो देखो आम खाली स्कार्स रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस कहबा नहीं इन टर्म्स ऑफ नॉलेज इन सब क्षेत्र में आपणकर आर्ट साइंस नॉलेज बिल्डिंग ए प्रोसेस रे मध्य
विभिन्न प्रकार समय रे देखा जायछि सेठी पीपल आर इन कंपटीशन विथ ईच अदर एंड एई प्रकार कंपटीशन जते बेले एकेडमिक्स रे होछि न्यू हाइट्स ऑफ एक्सेलेंस को हमें गेन करूछि ह्यूमन सोसाइटी इज गेनिंग न्यू हाइट्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज academics excellence eta madhya aschi tenu kori conflict is not restricted to only the violence no doubt se prakar ro madhya samajik parivartan ase but see that conflict perspective also helps in building and rebuilding society bringing higher level of social change in our society आ गुटे होची आमे आको आदौ टच कले नै सेते बेले सिंबलिक इंटरैक्शनिज्म आपण ए दीटा को खाली बुझंतु जे सिंबलिक आ इंटरैक्शनिज्म इंटरैक्शन आमे माने साधारण समाज रे परिवार भितरे वर्ल्ड अराउंड अस आमे जते बेले देखु जे ह्यूमन इंटरैक्शन हाउ ह्यूमन इंटरैक्शन टेक्स प्लेस डेली इंटरैक्शन हमर केमते होची आमे बेले बेले कहू ऑल्दो से प्रकार कहले तार बॉडी लैंग्वेज ठीक नथिला आमे हमर इंटरैक्शन ता वेरियस सिंबलिज्म माध्यम रे हुए अनेक समय रे in physical science also and in social science society around us we come across various symbols signs and symbols which gives us an automatic understanding we understand through symbols signs gestures किसी गोटे gesture कले मध्य आपण बुझी पारुछन मो कथा although mu party fitegri kichi कहि नै तथापि मोर gesture रे whether I have made a bad remark or ugly remark or good remark or appreciated you could come to understand that through a particular remark only through a gesture only mu kichi moh kholi kri कहि नै through my body gesture you could understand that I have appreciated your effort or I have made a ugly remark to you so symbolic symbols signs symbol these things play a very important or very vital role in our society so when we are going to understand parts of society and various phenomena in society we cannot overlook the role of signs symbol gestures body language everything so it is also told that symbolic interactionism ame ko hisab re interact karuche is a major theoretical perspective in sociology which will guide us in understanding the society in our research so I think I have completed some of the issues that I couldn't touch upon in earlier classes if Panigrahi sir would be there let us have a discussion okay ana che ko dan ken dingre ho joni hello hello sir is audible sir okay ana guttu dear learner so I mean your session is over sir yes I'll only I think we'll have some discussion on the previous year's question I have got 2 questions maybe we can have a discussion on those questions only so I mean learners if you have any doubts any clarification or anything you want to ask so please put forth your question so enter the research methodology paper whatever you have doubts please kindly put forth your question Hello. yeah go ahead Sir, can you explain independent and dependent variables? सेटा बुझी पालेनी टिके कथा होची से जो एग्जांपल टा देली मु भाबुची दैट एग्जांपल वुड हैव बीन हेल्पफुल बट एनीवे आउ थरे सेटा को देखंतु जे इलिटरेसी ऑफ मदर्स लीड्स टू फीमेल इन्फेंटिसाइड एटा बुझिले ना
हाँ सर जे गोटे धरा जाऊ मु गोटे हाइपोथेसिस करिछि मु निजकु निजे गोटे स्टडी रा हाइपोथेसिस नैछि मोर विभिन्न हाइपोथेसिस भीतर वन अमंगेस्ट द हाइपोथेसिस इज जे इलिटरेसी ऑफ मदर्स लीड्स टू फीमेल इन्फेंटिसाइड एटा मु ग्रहण कर नैछि धरि नैछि एंड धरि नैछि कोन जे माय स्टडी विल may or will definitely bring in this kind of desired result जे मो स्टडी पॉसिबली कहबो जे इलिटरेसी ऑफ मदर्स लीड्स टू फीमेल इन्फेंटिसाइड ए जगह रे आपनकर फीमेल इन्फेंटिसाइड इटसेल्फ कहा ऊपर डिपेंड करछि कोन आंती एटा बुझले बुझी परिबे जे जदी इलिटरेसी अछि कि नहीं मु कोन कहूची मो स्टेटमेंट रे कहूची जदी इलिटरेट मा अछंती तले दैट विल लीड टू फीमेल इन्फेंटिसाइड हला तो फीमेल इन्फेंटिसाइड सब बेले डिपेंड करिवो कहा ऊपर डिपेंड करिवो जदी गोटे वेरिएबल इलिटरेट अछि कि नहीं तो जदी इलिटरेट नाही ताले ये हबनी बुझि पाले ना तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर वन ठीक है बुझि हला हाँ सर ओके there are few more questions previous years question just mo question टिके आपण मान को देखौची एवं even Panigrahi sir and I will suggest how you will write the answers so that it will be mark fetching गोटे बड़ जिनस होची सपोज मु गोटे क्वेश्चन देखौची आपण को आपण 3 घंटा भितर 100 मार्क रो क्वेश्चन देबे 20 मार्क होची आपण को इच क्वेश्चन 20 मार्क एक क्वेश्चन गुडा को देखा जाउची आपण को देखा जाउनी बोले नो सर देखा जाउ नहीं anyway मु जति क्वेश्चन अछि आपण माने मध्ये क्वेश्चन पाई परिबे डाउनलोड करि परिबे जदि मु जति क्वेश्चन डाउनलोड करिछि आज इवनिंग किबा काली सुधा सब क्वेश्चन आपण मानकर सार को किबा आपण को ई WhatsApp ग्रुप रे मु छाडी देबी बुझ परले the only thing is that गोटे इंपोर्टेंट जिंस आमे जेतेबेले माने फ्रंट क्लास रे क्लास करू पिला को प्राय थरो कहू आपण माने जो माने इग्नू रे एई वर्ष नुआ कि आगुर इग्नू कोर्स कोन करिसंती आपण माने जानि छथि कि नहीं खाली भारत नुह भारत बाहर मध्ये कपल ऑफ कंट्रीज रे इग्नू स्टडी सेंटर अछि एवं सेठी मध्ये पिला पाठ पढंते इग्नू रे so it's a vast university keeping that in view गोटे इंपोर्टेंट जिंस प्राय टीचर पिला मानन को कहै जे आपण माने नो डाउट you are very much interested and you are eagerly awaiting the study material that will reach your home soon sir कहले पहुंचीबो जिंस कथा होचे सब बेले पिला माने बही रे जहा लेखा है ताकू केमती आंसर रे देखिबा पई चेष्टा करिबा पई बहुत जोरे थांती एवं पिला सब बेले आसी पचारिबे जे एवरेज मार्क काहे आसला बोलकी no doubt for the last 8 classes I have also consulted mostly I have consulted your textbook only but beyond that I have also tried to capture some of the things from internet कथा होची जतबेले आपण एनालिसिस करूचंती उत्तर दउचंती किछि क्वेश्चन रो try to be more innovative in actually giving your answer please write in your own framed ways तम निजर सेंटेंस रे लिखियो चेष्टा करंतु एग्जांपल्स एटलीस्ट आपण माने किछि बही देखिबे 83 84 मसिया रो स्टडी मटेरियल एबे भी हमें दउचू तेनु करी से बही रे जो एग्जांपल अछि ट्राई टू रिफ्रेम द एग्जांपल्स so that it will appeal or it will be interesting for the examiner so from the examiner's point of view please write the answers in such a manner that he will be interested in giving you good marks
unless you will do that, you will always get average marks. So এটা ଗୋଟେ average ପିଲାଙ୍କର ଇଏ ଥାଏ ଯେ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଲେଖିବି ଏବଂ ବହିରେ ଯାହା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଦେବି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି କରିବା ଗୋଟେ କଥାରେ ଯେ apart from other sciences, other social sciences even, ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ତାଠୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଟର ଫୁଟିଂରେ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପେପରରେ ମୁଁ ମେଥୋଡୋଲୋଜି କଥା ଖାଲି କହୁନାହିଁ ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଗିଭ୍ n numbers of examples, ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି ଟୁ ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସକୁ ଯେତେ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଲ ଅଫ୍ ଇକ୍wi ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, ଡିମିନିସିଂ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏପଲ ଜାଗାରେ ମିଠାଟେ ଦେଇପାରିବେ, ତା ଛଡା ଅଧିକା କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନରୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଯୋଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। Can you add anything? No, you are not free to add anything on president ro emergency power. But here in sociology, when you are analyzing things, when you are putting forth answers for a particular question, you are feel free to give your perspective on in the answer sheet also. So the examiner will be happy and appreciate your kind of effort. Could you follow me? Yes. See, I'm adding, supplementing something else, other things also. So what rightly sir is told about the writing pattern of the examination in IGNOU systems. So see, sociology is basically, you have to strong in language like English. So as per my knowledge goes, no doubt the content is there, but you should strong in your language. Okay, your expression, your view is sociology. It's an emerging kind of subject. Okay, so you whenever you are writing, your answer, what sir has rightly said, you should not be confined to your textbook, and no evaluator is not telling that which bookish language you wrote. If you write the bookish language, definitely somebody will feel that you are copied from the books. No doubt. फ्रेंड्स, सारंकर कथाटा ऑडिबल होची आपण मानको? नो सर। हां, ठीक है, सार को फोन करे। But I am audible na? Am I audible to you? Yes sir. Yes sir. सार कौन से हिसाब रे कटि जाई कोन टेक्निकल प्रॉब्लम हेची। तेकर बड़ जिंस होची जे आपण केते बेटर वे रे आपण को कथाटा को सितरे रखि परछन, कारण जेते जा करंतु आमे जेते आइडियोलॉजिकली कथावार्ता कले मध्ये एट द एंड ऑफ द डे आपण गोटे कोर्स करूछते एवं ताको आंसर एग्जामिनेशन हबो ऑन द बेसिस ऑफ आंसर्स यू विल बी अवार्डेड द डिग्री। हां, तो से हिसाब रे आपण काइंडली देखंतु जे हाउ बेस्ट यू आर एबल टू रिप्रेजेंट द आंसर। एवं आंसर देखला बेले प्राय तो सब बेले बुकिस रो बही पढंतु, नुआ कथा कोन करा जाय परियो। आज काली गोटे बड़ जिंस होची गूगल इज हेल्पिंग यू आउट। इवन मु ड्यूरिंग एई 8टा क्लास भितरे आई हैव आल्सो टेकन हेल्प ऑफ गूगल एंड मेनी ऑफ द स्लाइड्स आई हैव आल्सो टेकन इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस ऑफ गूगल। तो गूगल रो गुडा जिंस बुझीबा को चेष्टा करि परिबा आपण इजिली। जो गुडा का मेथोडोलॉजी जिंस आपण बही लैंग्वेज रे बुझी पारुनाती, आपण गूगल ले खाली बुझीबे, गूगल स्कॉलर रे बुझीबे, जदी इजिली गोटे आगो बुझी जिवे तापर ताको लंबा करी आपण आंसर लिखि परिबे।
मेथोडोलॉजी बही रे कोन बही रे कंफ्यूजन होई बहुत समय किंतु सेही जिंसटा आपण गूगल ले देखिबे आ इंटरेस्टिंगली आ गोटे जिंस हम आपन को कहि रखे गूगल ले आ गोटे जिंस आपण पाइबे गूगल स्लाइड शेयर गोटे अछि बुझिले स्लाइड शेयर सेतरे स्लाइड रे मध्य आमे जेमति स्लाइड रे बुझौछु विभिन्न मेथोडोलॉजिकल चैप्टर गुडा स्लाइड रे मध्य अछि आपण स्लाइड रे मध्य बुझि परिबे स्लाइड शेयर हां हेलो सर यस यस हां कोन सर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रो सर किछ स्लाइड सर व्हाट्सएप ग्रुप रे सर शेयर करिए प्लीज हाँ ना मु संध्या बेल को करिवि हैं कथा होची कोन की क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी रो जेहेतु मु सेतरे वीक हैं आई मस्ट कन्फेस जे मु गोटे फ्रेंड को कहली गाली करिया पे एवं फ्रेंड रो प्रॉब्लम हमर टेक्निकल कोन हैला जे आपन को हमें स्लाइड न देखेई कि से कथा वार्ता करले आज्ञा सर so I am aware of the problem so I have already received the slides so possibly आज इवनिंग रे मु से स्लाइड शेयर करिवि आपन मन को आउ जदी लेट होची कोन होची काइंडली नोट माय टेलीफोन नंबर सो दैट वी विल बी इन टच यस सर 94372 सर 94 372 372 19025 19025 सर 25 हां 25 190 25 यस सर मु ता सी मते ऑलरेडी गोटे शेयर दे माने देई चंदी स्लाइड एंड मु तांको कहि आउ टिके बेटर वे रे जदी कोनसी खाता रे करी कि तार फोटो उठे कि पठेबे इट वुड बी गुड सो ही हैज एग्रीड दैट ही विल गिव अनदर स्लाइड टू मी सो मे बी आज संध्या रे नहेले मध्य मु काली सुधा आपन को से स्लाइड देबी जदी कोन असुविधा होची आपन मते फोन करिवे यस सर ओके सर थैंक यू सर ओके आ पाणीग्राही सर बदे आसी पारु नहंती लाइन को किछ असुविधा आइची नहीं सर सर आसी ना सर आपण माने सब कोठो आपण पवित्र कहउछन तो आज्ञा सर पवित्र आपण कोठु सर मु केंद्रापड़ा सर केंद्रापड़ा यस सर केंद्रापड़ा आपण जानिबा कथा जे केंद्रापड़ा ओडिसा रे सोशियोलॉजी रो एक्चुअली माने कहा जाय जे माने से गोटे मा घर भलिया आज्ञा बुझिले बड़ बड़ सोशियोलॉजिस्ट मानकर आरंभ से केंद्रापड़ा रहिछि यस सर हमें सुनिछि जड़े नायडू सर थिले मरि गेलनी बोधे से नाइट सर बही फई लिखितले से सर आ ना थी आ सब एक्सपेक्ट करिया बहुत सुनिछि सर का आज्ञा सर बहुत जेते बड़ बड़ सोशियोलॉजिस्ट माने आज आमे देखु जे तांके से माने मध्ये सेठू सेठिका सार मान को पाखरे पढि चंदी केबे ना केबे आपण माने कोन खाली पढु चंदी ना चाकरी बाकरी कोन करू चंदी नहीं सर स्टडी ऊपर चलछि सर अच्छा अच्छा आज्ञा सर सर मोर केंद्रापड़ा सर ऑटोनोमस कॉलेज सर अच्छा आज्ञा सर केंद्रापड़ा पुराना कॉलेज बड़ कॉलेज हो आज्ञा सर 2 नंबर स्थान रे सर अच्छे कॉलेज स्थान सर केंद्रापड़ा रे आपन को सोशियोलॉजी रे को सर मान अछंती सर हम तो सर क्लास करिनु सर कोइ परबिने सर हां 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 आज्ञा Am I audible? हां सर आपण ऑडिबल Yes, है sir. So, dear learners, what I told you about the examination writing skill. So I think you got what I want to tell you. I mean, I don't know. I also when I discovered, I also don't know. So students, I mean, regarding assignment, your examination, I mean, about examination, about student support service, about material, I mean, about whatever the doubts or the research methodology, please put forth your question. You should not be the simple listener. How do you feel the class? What is your experience about the online classes? Am I audible? Yes, sir.
So you don't have any doubt? Tomar kiti doubt nahi? सर कनेक्शन ऊपर डिस्कशन करिवार थिला अच्छा गुड 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 अन्य माने भूली जाइछन बोधे बढ़िया कथा सेतरे हमें तीनटा जिंस देखिथिले ना नु कि गोटे होची डिस्क्रिप्शन आरोटा होची कोन गोटे डिस्क्रिप्शन आरोटा क्लासिफिकेशन मन पड़ला तापरे आमे कोचे कनेक्शन मु सेति पय कहली जे कनेक्शन कथा जेतेबेले पड़चे डिस्क्राइब कले डिस्क्राइब रे मध्ये तीनटा विभाग मु देखैथिली जे इंटेंशन कोन तारो बेस कोन पृष्ठभूमि कोन थिला ए सब परे आमे कनेक्शन एथि पय इंपोर्टेंट जे बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेस और अवेलेबल डाटा that has been collected from the field and based on the classification of data based on the description and classification of data how the sociologist or social scientist is making connection to reach to a particular conclusion बुझि पल्ले तो एटा गोटे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कथा पड़ी नै कोन सी फिजिकल लेवल रे हमें कनेक्शन कथा पड़ने हमें कहू जे हाउ द सोशियोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट इज कैपेबल एनफ टू unravel the truth or penetrate deep into the study to reach on a particular conclusion by describing and systematic classifying the data and having or maintaining a connection between them ये जो connection टा सेटा it is the onus of the researcher himself आपण पाखु सब डाटा आसी पहुंचला परे who will analyze that data डाटा एनालिसिस रो विभिन्न हमें प्रोसेस कथा कहले विभिन्न मीडियम्स अछि आजिकली आहुरी क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रे गुडाय सपोर्ट मेकानिज्म हेइ गलानी बट एट द एंड ऑफ द डे द रिसर्चर हिमसेल्फ हैज टू मेक द कनेक्शन एवं कनेक्शन टाको हमें एनालिटिकली केमिति बुझी जे हाउ and in what perspective what bent of mind he is going to apply his own theoretical perspective and understanding on the basis of classification of data he is reaching on a particular conclusion of the study problem statement ru e porjanto jetole se asuchi based on the study se classify koruchi describe koruchi on the basis of description and classification of data he is reaching to conclusion through a kind of connection and connection gote mental ye no various dynamic processes are involved in the in reaching out to a particular conclusion through his bent of connection applying various kind of research methodology applying various kind of research perspective theoretical perspective he is reaching to a particular conclusion Okay, students. Ask any further question. No, tomorrow same time your MSO-1, okay, your sociological theory, another ma'am will take. So same link. What are the link you are getting to? I mean, for MSO-2, same link will continue. Okay. So tomorrow also same time for the MSO-1 paper you have to join. So I mean, any question about the research methodology? सर एग्जाम पे सर केमित हेलो सर एग्जाम पे सर प्रिपरेशन केटी सेट है सर कौन से Exam में प्रिपरेशन सर listen, whatever material you are getting, whatever Yes, material you are giving, the study material is made in such a way if you read yourself. So after reading 2-3 paragraphs, there is a space, there is a blank space. You have to write in your own language. Okay. Then end Yes, of sir. the unit. Okay, end of the unit, then writer has wrote his own answer. Then you compare what you understood about studying the material and what writer says. If somebody can read the material, I am telling you, it's a guarantee 60 to 70% you can understood by your own language. By Yes, your sir. own. So why you are making the counseling session for 8 or 10 classes? Because that's why you're telling. If you read the books, then you'll understood whatever you not understood. Those questions should put for your counselor. So he will clarify you. That's why you're telling
before coming to class, please go through the because the language is so simple. Okay, the Yes, clarity, sir. the explanation, everything is good in the materials. Because straight away I can tell you, go and read Das Capital. Okay, so then Yes, you sir. can understood because the language written by the original text is very tough. But this whatever the IGNOU is giving the material, that is not the original text. It's not the original classical book. Okay, because Yes. the Karl Marx by Emil Durkheim and the Weber. If you read the original classical textbook of what was written by the sociologists, that may you cannot understood. Okay, because Yes, sir. you do feel that maybe language is very strong, it is very tough. If somebody is not from the sociological background, so because see, for example, I am telling you, I am not from the sociological background. I had done my BTech, then I joined MA sociology. For me, because I have no basic concept and basic idea of the sociology. But when I joined MA, that is called hallmark of the beautification of this social science. Then initially I read the IGNOU books. Then conceptually I had got the clarity. Then I started reading the original textbook. Suppose today I will tell you go and read Das Capital, you cannot understand anything. Because certain strong language is there. But once you will go through the IGNOU study material, then your conceptual clarity about the sociology, you can understood. You can, strong enough to understood what is sociology. If I'm sir will correct it. Am I correct or not? Because sir also agree with me, maybe. So what I'm telling you, so that's why IGNOU study material is conceptually is very, 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 very strong. So go through with those materials, then you will understand what is in there in the Please put phone in the mute mode. Otherwise, very disturbance is coming. Other person cannot understood. Fine. So right way you can prepare for exam and any other person has any question regarding anything anything you want to ask. Sir, exam pattern କେମିତି ରହିବ? What? Exam ର pattern କେମିତି ଅଛି? Your voice is not clear. Not getting. Not getting your question. Sir, exam pattern ବାବଦରେ ଜାଣିବାର ଥିଲା. Exam Pattern. pattern. ହଁ sir. क्वेश्चन पैटर्न कहउछन्ती कि ହଁ sir, question pattern. ए क्वेश्चन पैटर्न आम पाखरे प्रीवियस इयर्स रो क्वेश्चन अछि आमे पठाई देबु आमे व्हाट्सएप Shundu, ग्रुप रे सब दी करिया तो you will answer 5 question. Okay. All question carries 20 marks. Okay, it's a long time question. So basically all the times is asked, you have to critically evaluate. Okay, so answer should be like this. You have to write your own language, and there is a word limit also there. It's not like that somebody can write a 20 pages. It's maybe a 500 words. So you have to write your answer within that limit. Okay, so Yes sir. question is available in the website, or sir is rightly said he will put it in the WhatsApp group. You can go through with that question. So before I'm repeatedly telling you, you people are not studying. Okay, suppose sir is coming for the class. Once he will taking 2 hour class, minimum he is studying 4 hours. Minimum. Then only he can taught you for 2 hours. But being a student, what I'm telling you. When I was doing my MA, I was studying 12 to 13 hours per day. And my professors are reading 15 to 16 hours. You can't believe it. Professor mane 15 ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ପଢୁନଥିଲେ because they want to teach MA students, so they are studying around 15 to 16 hours. You can't believe it. You ask to sir how much time he is going prepare for you for taking a class. You ask to sir, am I telling right or wrong? So you start studying, but you are not studying. See, it may be a distance education or it may be a conversation that doesn't matter, but you have to read because master degree is not a joke. Getting a master degree means you have to study. Maybe you are a working class, maybe you are engaged somewhere else, still you have a time. If somebody wants to study, see the books are so small, you can carry also.
When you are moving, to in the bus, wherever you are going, you can carry the books. For you, it's not required a library. You will carry these books and you will read and you will go through with the materials. You can get enough knowledge about the sociology. Okay, now you put for the question to sir. Sir will supplement what else you want to speak. Yeah, only ଜିନିଷ sir, it is also a learning experience for me. ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ possibly I could have done justice more by actually focusing more on almost all the aspects of every units of the block, but it is virtually impossible because I thought that it is the things which were I thought from my perspective that which will be important from the perspective of examination as well. I tried to put forth those things in my slides. So maybe you might come across some of the issues which I have not taught or I have not included in my slides. So please bear it in mind that some of the things that I have not touched upon, you can understand it by yourself. But I have tried my best to actually touch upon whatever I feel important from your examination point of view or for your understanding point of view. Maybe মানে যেহেতু রিসর্চ মেথোডোলজিটা সো ভাস্ট সবজেক্ট and ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ପିଲାଙ୍କର ମାନେ in spite of SAR's repeated request in front of you in the class as well as WhatsApp group ରେ ସେ ବାରମ୍ବାର engage ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ପିଲାଙ୍କର ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ 12-15 ଜଣ 20 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ରେଗୁଲାର ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ. And another request ମୁଁ କରିବି ଯେ apart from this, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉମାନେ MA ପଢୁଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଥୋଡୋଲୋଜିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡି ରାଇଗର ରହିଲା ନାହିଁ. ରିସର୍ଚ୍ଚ ରାଇଗରଟା ଆମ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ରହୁନାହିଁ. ଆପଣମାନେ ଆକୁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରି ଡ୍ରାୟର ଲାଗେ ପଢିଲା ବେଳକୁ, ବଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହବ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ତିଆରି କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଯେ ମେଥୋଡୋଲୋଜିରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ହବ. ଏବଂ ଏପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆ ଛଡା କାଲିଠୁ ଆଜି ଉପରବେଳା କିମ୍ବା କାଲିଠୁ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡାକ ଆପଣମାନେ କରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟୁ ୟୁ. କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଫ୍ୟାମିଲି ମ୍ୟାରେଜ କିନସିପ୍ କାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୁଡାକ ସବୁ ପଢିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏବଂ ପଢେଇଲା ଲୋକ ବି ବହୁତ ମଜା ପାଇବେ. ତେଣୁକରି I can add you one thing, dear learners. If really research methodology very technical papers, but if you want to pursue your academic career in sociology or in the NGO field or whichever field you want to go, research methodology is one of the best tool in your life because you want to write an annual report or whatever things. So see, master degree is the base. Whichever field you want to choose, if somebody has done justice to master degree course, really I am telling you, like MPhil and PhD in whatever quality of education or degree you can acquire, but master degree is a master degree. Because whatever the paper as taught in the master degree, you cannot find in any other degree, nor in MPhil nor in PhD. So don't miss out your master degree course. It's really, I'm telling you, it's a very good design. Master degree is such a nice kind of degree to enhance your knowledge, enhance your skill. Don't miss this chance because you are choosing this master degree. Kindly, I'm telling you, read thoroughly. And suppose you are more interested to read methodology paper, read EH card. Okay, so it is a classical textbook. If you can understood, that's it. I can tell you supplementary. But if not that, please kindly read the IGNOU material, learners. You can enhance your knowledge like anything. Okay, no doubt it's a technical paper. It's like a bit boring kind of paper. I don't know how justice sir is given to you and how you can understood about that. And another things I am telling you, students, if you know anything about the assignment, okay, because assignment is a very important component of this system, because that is the
What I am telling you, if you simply write your town examination carries 70%. Assignment also has a value to the system. That's also weightage of 30% is there. If you not submit your assignment, your course will not complete. Okay. So assignment is a compulsory component. Okay. So that's why it's called a continuous evaluation. But in our system, like I told you, there is a 200 students, only 20 students are joining for the counseling classes. But everybody must to submit the assignment. So through this assignment, our continuous evaluation process is going on, because the teachers and the students interaction is very minimal, because whatever the students have not joined these counseling classes, how they will know who is your counselor, and how the learner will know, what is the weakness and the weak point. So through this assignment, teacher will evaluate, the counselor will evaluate, and he will give the comments. Through this comment, you will understood about your weakness or strong point. So that's why the assignment plays a very vital role in our distance education system. That's why, am I audible? Yes, yes. Yes, sir. So that's why, dear learners, if you know anything about the assignment or any of the things, please put your question. Just simply you are telling and you are listening. That should not be. Yes. Hello, sir. Sir, हाँ assignment questions could पाइबे like ମୁଁ ପାଇନି so assignment questions sir. Hello. Yeah, go ahead, go ahead. Hello, sir. Sir, assignment questions कोठु पाइबे like WhatsApp पे send कर देबे और email करिवे अपन. What you are telling, ma'am? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି Assignment କି ସାର୍ questions sir. assignment question ଟା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? Assignment question ଆପଣ website ରେ ପାଇବେ. Okay. Our website is www.ignou.ac.in. Okay. So in your registration status also assignment there. Otherwise, you can go to the assignment section in website is there. Then you can download the assignment question from there. You can give your program code, then course code, then assignment question will come. Thank you, sir. Hello, sir. Yeah. Sir, there is a question in our assignment, and we have to write it in 3,000 words. The impact of mobile phones on social relationship. Sir, can you please elaborate it how to write it? Sir. Sir. नहीं ए प्रकार रो क्वेश्चन आसले माने ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଅପେକ୍ଷା ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ୟୋର ଓନ୍ ସେନ୍ସ ସୋ यार आपण माने तार इम्प्लिकेशन टा किबा तार इंपैक्ट टा कोन होची आपण जहा देखुचंदी लिखिबे बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर आंसरिंग दैट डोंट जंप इनटू ए कंक्लूजन within your answer. Your answer should not be गोटे कंक्लूजनरी बेस्ड न हो गोटे ऑब्जर्वेशन हिसाब रे आपण एनालिटिकली दियंतु दैट वुड बी गुड आ एनालिटिकली कोन देबे तो आपण देखुचंदी गोटे आपण आमे एई भितरे आपण देखंतु कोरोना भितरे 2.5 मास भितरे मध्ये आमे बियॉन्ड जो गोटे तथाकथित जहा कहआ होची जे मोबाइल फोन हो ये हो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट अछि आमे अंत तो एई पीरियड रे लॉकडाउन पीरियड रे वी हैव encountered, we have come across the educative side of this kind of technology. So, how best you are actually representing things and how positively you are looking at things. So, you can put forth both the sides, but but please keep in mind, bear it in mind that don't be judgmental, don't give a single-headed conclusion. Try to give both the perspective. आपण जो प्रकार जिंस दउचंदी एई प्रकार रो एनालिसिस रे आपण गोटे बैलेंस वे रे पर्सपेक्टिव बिल्ड करी के दियंतु दैट आंसर वुड बी मोर अप्रिशिएटेड बाय द एग्जामिनर. Okay, sir. Anybody wants to ask any question?
or will wind up the session? So I do feel I don't think much. I mean, any more questions left it out? I'm. So, dear learners, tomorrow, same time, your MSO 1 will start. So, do kindly join for tomorrow's class. So, thank you very much, Professor Mohanty. So, I mean, I really thanks to on behalf of IGNOU, Sir, on sir. behalf of me. I mean, out of your busy schedule, you have taken. I mean, you are given a time to us. I mean, I mean, with a short span of time, you accept my invitation and you join for this online counseling classes because this is also new for us also because you Sure, sir. never had joined this online e-counseling classes through this Google Meet. Sir. So, but no doubt, it's due to this pandemic, some new innovation is coming up. So it's a new kind of learning process for us also. Sure. So I do feel the students, the learners will enjoy this by this. I mean, staying in the home because now I do feel and no work. If these classes will not go on, then maybe you feel ideal. So due to this class, entire day you are busy. I mean, it's like a full time work. So sometimes Yes, passing time is not a boring kind of things also. You are doing some, I mean, meaningful work. sir. So Sir. by these words, so I conclude today's session. Thank you very Sure, much, sir. learners. So tomorrow same time, so I mean you will meet once again. So thank you very much, sir. Thank you, Thank you, dear sir. learners. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, My sir. best wishes to Thank all the you, sir. learners. Thank you, Thank you, sir. sir. Thanks, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.